नमस्कार मोर प्रियर ओडिशावासी माने मो वेबसाइट आपन स्वागत जनाऊँ आपणकर प्रिय चैनल बीबी इंडिया जार नाम हूँ विकास और वृद्धिर भारत एवं नयना डिजिटल स्कूल फ्रेंड आमे लेसन 7 रे आमे एचटीएमएल एलिमेंट ऊपर पढ़िथिले। एचटीएमएल टैग और एचटीएमएल एलिमेंट काहाकू कहंती हम ता विषय जानिथिले। एबे एचटीएमएल एट्रिब्यूट्स विषय आमे जानबो लेसन 8 attributes कौन what is the HTML attributes तापर जानबो। HTML attributes कौन दरकार हमर HTML प्रोग्रामिंग लिखवा तो HTML attribute रे डेफिनेशन हम जानबो। Attribute provide additional information about the content of an element. They appear on the opening tag of the element and are made of two parts, a name and a value separated by an equal sign. एठी लिखा है जे attribute provide additional information. एटा आपन गोटे प्रोग्रामिंग जते बडे लिखिबे एटा गोटे additional information आपन दोउची about the content of the element. हेला एलिमेंट रो कंटेंट का रहउची सेटा से additional information बाबर के दोउची। एठी आपन देखंतु गोटे एग्जांपल लिखा है image img stand for the image src that is source image source equal to reference। एठी जो image source जो रहउची एटा होची आपनकर एट्रिब्यूट और रक्षयात्रा होची एट वैल्यू। तो एठी जो लिखा है दे अपीयर ऑन द ओपनिंग टैग ऑफ द एलिमेंट एंड एठी होची जो रहउची देखो ओपनिंग ब्रैकेट रहउची दीटा ओपनिंग ब्रैकेट भीतर आपन लिखुछंती आपनकर एट्रिब्यूट नेम एंड तार वैल्यू। तो ना एट्रिब्यूट नेम इज रिप्रेजेंट योर वैल्यू ऑफ द एट्रिब्यूट इन नेम और वैल्यू दीटा separated by a equal sign। एटा लिखा है एटा रहउची आपनकर एट्रिब्यूट एटा आपनकर रहउची वैल्यू दीटा सेपरेट का द्वारा रहउची इक्वल साइन। ओके the attribute name indicates what kind of extra information you are supplying about the element content। it should be written in the lower case। देखो attribute जो भी लिखा है एटा लोअर केस रे लिखा है src होची आपनकर एट्रिब्यूट एटा सीटी आपनकर लिखा है it should be written in the lower case। the attribute name indicates what kind of the extra information। एटी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन से कौन दोउची एटी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आपनकर दोउची कि रक्षयात्रा को आपनकर एचटीएमएल प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट करोची। आपन जते प्रोग्रामिंग रो कोड को लिखिबे सेटा होची इमेज सोर्स लिखिले इमेज सोर्स इक्वल टू रक्षयात्रा माने सोर्स तो से तावन आपन से बुझेई दबो कि इमेज जोटा तर कोड सोर्स को आछि और सेटा नाटा कोन नाटा होची रक्षयात्रा। सेति पई को है जे एसआरसी होची आपन एट्रिब्यूट नेम एंड रक्षयात्रा होची आपनकर वैल्यू। नेक्स्ट the value is the information or setting for the attribute। it should be placed in double quote। different attributes can have different value। एटी देखो जो लिखा है जो वैल्यू रहउची एटा डबल कोड भीतर रहिबो डबल कोड रे आपनकर जो वैल्यू रहउची सेटा लिखा दिबो सेटा होची वैल्यू टा को रिप्रेजेंट करूची तो हम डबल कोड रे लिखा होबा पई सेटा आपनकर एठी मु पूर्वरु देखै सर्किट देखो एटा होची वैल्यू जोटा कि रिप्रेजेंट करा होची डबल कोड रे रिप्रेजेंट आपनकर करा होची। एठी देखो डबल कोड अछि तो एटा सीट लिखा है it should be placed in the double quote। different attributes can have the different value। प्रत्येक एट्रिब्यूट रो प्रत्येक रो डिफरेंट वैल्यू एटा तो आपन बुझी पड़थबे। एठी देखंतु लिखा है इमेज सोर्स को कोन कहतली आपन src जोडा रहउची सेटा होची एट्रिब्यूट। दिस इज द नेम ऑफ द एट्रिब्यूट src is called a attribute and it is represent to your value। represent that means it आपनकर एटा को रक्षयात्रा को रिप्रेजेंट से करूची so that रक्षयात्रा is called attribute value। src is called attribute is represent to your attribute value। okay in this above example src is called attribute which is always represent to the image source। the value of this attribute on this page specifies the image। एठी होची स्पेसिफाइज कोन करची इमेज को से स्पेसिफाई करची। ओके एबे हमें लेसन 9 रे सिखिबा डॉक टाइप एचटीएमएल कोन आमर जो प्रोग्राम आम लिखुं से फर्स्ट हेडिंग दौरान डॉक टाइप एचटीएमएल
तो आम तार फास्ट हेडिंग आम जाना कि डॉक्टाइल HTML कौन ता विषय आम पढ़ा। तो फ्रेंड जदि आपको आमर पढ़ा जदि भल लगुच आम जो इनफर्मेशन आपको बताऊँ वेबसाइट डिजाइनिंग केमी हम केमी आप निजे करेंगे जदि आपको भल लगुच तेज सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एंड शेयर करूँ। शेयर कले जो पिला पहुँची पारे पहुँचो से भी देखिपारे से भी शिखिपारे। तो आप प्लीज एक शेयर करने को भूलु नहीं। तो सांग मैंने आम नेक्स्ट लेसन आम देखा डॉक्टाइल क्या कहुए यहाँ लेसन 9 पढ़ा। तो ओके थैंक यू वेरी मच।